हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अस्सलाम आ रही है वालेकुम। ठीक से? ओके, यस सर। फिर स्टार्ट करता हूँ। हमारा कल कुछ रह गया था। ओके, इसको करते हैं मिनिमाइज। हाँ, तो कल हमने किया था ये quotient space. So if X is a normal linear space, so you have got फिर से हाँ, so X is a normal linear space and Y is a closed subspace. Then if I take the quotient of X by Y, that means this thing, all cosets X belongs to X, and I choose the usual operations on the quotient space, it's vector space, and furthermore, if I define the norm of the coset to be X plus Y, the coset norm is equal to infimum of the set of X plus Y, so that Y belongs to Y. अगर मैं ये लेता हूँ norm की definition, then X by Y is a normal linear space. इसका दूसरा हिस्सा ये था कि if X is complete, so is X by Y. तो ये तो हमने प्रूव किया था ये नॉर्मल लीनियर स्पेस है. लेट्स टेक द सेकंड पार्ट. नाउ सपोज X is complete, means it's a Banach space. Suppose every Cauchy sequence inside X is convergent in X. Suppose X is complete and we have to show that X by Y is complete. So let's take a Cauchy sequence, an arbitrary Cauchy sequence in X by Y, and show that it converges inside X by Y. So that's what we are going to do. Okay, now let me write it as xn plus y be a Cauchy sequence inside X by Y. Okay. अरे एक मिनट. ठीक है. So let's take a Cauchy sequence there. Okay. Admit कौन है? Okay. Be a Cauchy sequence in what? We have to show that it converges inside X by Y. Arbitrary Cauchy sequence लिया हमने. Cauchy sequence का मतलब ये है. So Cauchy sequence अगर कोई किसी भी norm, मतलब remember that we have shown that X by Y is a normal linear space. So which implies that X by Y is a metric space. Every normal linear space is a metric space. So there is something called a theorem. There is a theorem in metric space which says that a Cauchy sequence would converge if it has a convergent subsequence. It's not that difficult to prove. मुझे लगता है छोटा सा theorem जो तुमने metric से topology में किया ही होगा, वो ये कि if you have a Cauchy sequence xn and it has a convergent subsequence, then it must also converge to the same limit. So that's what we are going to use. So we show that xn, yeah, it suffices to show that. Now we show that
xn plus y has a convergent subsequence. Okay. Now what we do now, we first find it, we choose a particular subsequence of this Cauchy sequence. Now remember what happens inside a Cauchy sequence. The distance between the points becomes arbitrarily small in a Cauchy sequence. So Cauchy sequence का मतलब क्या होता है? You've got this xn minus xm is less than any number after a certain stage, right? After a certain n naught, this can be made arbitrarily small. So since xn is Cauchy, और मैं ये लिखूंगा, फिर मैं थोड़ा उसको समझाऊंगा. xn plus y is Cauchy. It is possible to find. It is possible to find a subsequence in a subsequence x. Let me write it as xn sub I plus y of the original sequence such that norm of xn sub 1 plus y minus xn sub let me call it 2 plus y, इसकी जो पहली और दूसरी टर्म में जो डिफरेंस है वो लेस देन हाफ है, और दूसरी और तीसरी टर्म में जो डिफरेंस है वो xn 2 plus y minus xn 3 plus y, this is less than 1 by 2 square and so on and so forth. इसी तरह से जो kth टर्म होगी xn sub k plus y minus xnk plus 1 plus y is less than, इसका नॉर्म जो है वो less than है 1 by 2 raised power k. Now this can be done. The reason being that I already have a sequence जहाँ distance है ना वो बहुत कम हो रही है eventually. तो मैंने मान लो पहली एक टर्म ली, राइट, फिर मैंने नेक्स्ट वाली टर्म ली, मतलब मैं आगे बढ़ता गया, आई हैव गॉट इन्फिनिट सेट इन इन्फिनिटली मेनी टर्म्स. मैं वहां पे पहुंचा जहां पहली और दूसरी टर्म, मतलब पहली और नेक्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है वो लेस देन हाफ है, क्योंकि वो तो आर्बिट्रली स्मॉल होता जा रहा है. तो मैंने उसको कहा अपनी पहली टर्म सीक्वेंस की और इसको दूसरी, एंड देन आई मूव फर्दर ऑनवर्ड्स और चूज करूंगा मैं वो वाली टर्म such that दूसरी और तीसरी की जो डिफरेंस है वो less than 1 by 4 हो, and so on and so forth. So I can choose this subsequence of the original sequence because the original sequence is Cauchy. And we show that this particular subsequence actually converges inside x by y. That would show that xn plus y converges inside x by y, which means that x by y is complete. So that is the process. We prove that this subsequence जो हमने अभी की निकाली ओरिजिनल सीक्वेंस में से is convergent in x by y. Okay, now what we do now since मैं यहाँ since अभी जो मेरा जिस तरह की मेरी अब सब सीक्वेंस है, I have got xn1 plus y minus xn2 plus y, this norm is less than half. ठीक है? Now what I do is, it means that मैं यहाँ पे रखूं, इसका मतलब है अगर मैं यहाँ, इसका मतलब एक्चुअली ये है कि infimum of the set, अगर मैं ऐसे लिखूं, infimum of this set, norm of y1 minus y2 such that y1 belongs to xn1 plus y and y2 belongs to xn2 plus y is less than half, right?
So then I should be able to find a vector y1, y2 such that, because infimum, suppose this infimum, suppose all these numbers, suppose when I let my y1 and y2 range over these two cosets, suppose suppose all were greater than equal to 2, greater than equal to 1 by half, then its infimum would also be greater than equal to 1 by half. But since infimum, this thing is infimum is less than half, then we can find a vector. So वही है main idea यही है इसमें. So we can choose a vector. So vector, we choose vectors y1 belonging to xn1 plus y and y2 belonging to xn2 plus y. We can always do that because of this infimum thing, such that norm of y1 minus y2 is less than 1 by 2. Similarly, we can choose y3 belonging to xn3 plus y such that norm of y3 minus y2 is less than what? Less than 1 by 2 square, and we can just go on and on. And having chosen yk belonging to xn sub k plus y, we can choose yk plus 1 belonging to xn sub k plus 1 plus y in this coset, such that norm of yk plus 1 minus yk is less than 1 by 2 raised power k. And remember this, and we are almost there. Therefore, I turn the page. I turn the page here also. Now, suppose if m is less than none, we get the same idea. Let's take this. Suppose if m is less than n. If m was greater than n, we would also get the same idea and the same result. Then norm of, now this sequence ym minus yn, in norm, I can write it as norm of ym minus ym plus 1. Of course, then plus ym plus 1. क्योंकि m n से छोटा है, if I keep adding, I will reach to n. So I would have plus, and I take ym plus 2 plus so on and so forth. Eventually, I will get to yn minus 1 plus 1. Oh, sorry, minus. I have added and subtracted the same thing, so nothing changes. So this would be less than equal to, by property of the norm, ym minus ym plus 1 plus ym plus 1 minus ym plus 2 plus so on and so forth, norm of yn minus 1 minus yn. Okay, now पिछले पेज पे जाएं. So yk plus 1 minus yk is less than 1 by 2 raised power k. So this means this is less than 1 by 2 raised to power m. This is less than 1 by 2 raised to power m plus 1 plus so on and so forth. And this is less than 1 by 2 raised to power n minus 1. Okay, so you take 1 by 2 raised to power m. चलो कॉमन लेते हैं. अंदर बचेगा 1 plus 1 by 2 plus नहीं, हाँ ठीक है. Okay, it's 1 plus 1 by 2 चलेगा. 1 by m यहाँ हो गया, तो it would be n minus m minus 1. Right? Okay, commonly. Now if you look at this thing, right? This expression here, this is less than 1 by, this is less than 1 plus 1, so it is less than 2. So it is less than 2 because if I take the infinite sum, it converges to 2. You know that 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus so on and so forth, it is equal to, because it's a convergent sequence, this is equal to 2.
So if I take any smaller sum, so that should be less than 2. So it means it is less than 1 by 2 raised to power m minus 1. Now, which goes to 0 as m approaches infinity. Now, as m approaches infinity, n is bigger than m, so it means it means n also approaches infinity. Therefore, I can say norm of ym minus yn converges to 0 as n m, whatever m approaches infinity to n b approach infinity. So what does that mean? But this is the definition of Cauchy. So it means ym is a Cauchy sequence in actually x, and x is complete, implies that there exists some y belonging to x. वैसे इसमें y और x usually होता है ना, x belonging to x, doesn't matter, you know. You have to remember y is a subspace of x. So we are inside the same space in any case. So yn is a Cauchy sequence such that yn converges to y. So yn converges to y, and we know that if I now take x sub nk plus y, this norm minus, oh, I should take fine. Here I would take, what should I take? Y plus y. Although यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ख्याल रखना है, this जैसे अगर y को belong करता है, y x को belong करता है ना, it need not belong to y, क्योंकि वरना ये y हो जाएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन it need not belong to y. तो यूजुअली कंफ्यूजन होता है ना कि स्मॉल y है तो ये कैपिटल y में ही होगा, यहाँ पे वो बात नहीं है. It's just this thing. Now what does it mean? Now this would be less than equal to yk minus y. The reason being, what is yk is a member here, right? And y is a member here, of course, isn't it? Now y belongs to y plus y, because this is a set. इसमें y भी एक member होगा क्योंकि इसमें 0 बैठा हुआ है. It's a subspace. So इसके members जो भी होंगे वो होंगे y plus something, where all these members. So if it belongs there, so this, what I'm trying to say is that since this is okay, let me better है कि मैं लिखूं यहाँ पे फिर से. इसका मतलब क्या है? ये जो ये norm defined है, it is infimum of the set. So इसके members होंगे यहाँ infimum के. ये कौन कर रहा है? ये लकीर कौन मार रहा है खामखा फजूल में? गलती से हो गया? Don't do it. What I'm trying to say is this. जैसे कि मैंने पहले किया, ये जो है ये infimum of these norms हैं, where yk belongs here and y belongs here. So infimum जो है वो less than equal to any member of that set होगा. Infimum का मतलब ये है, because this is the coset norm on the left hand side, this is the usual norm. So it is the infimum of this set, so this should be less than equal to this. Now, of course, this goes to 0 as k approaches infinity, which implies that xnk plus y as a coset approaches to y plus y. Of course, this belongs to x by y. So which implies xn sub k plus y converges inside x by y, which implies x by y is complete. So this is done. So we have shown that quotient space, actually इसका converse भी true है, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा और पढ़ना होगा. So now we have x by y is complete under the coset norm. Coset norm if x is complete. Actually ये भी सच है कि if x is complete, लेकिन हम बाद में करेंगे, then x by y is complete. नहीं, उल्टा मैंने किया. If x by y is complete, then x is complete. वो भी true है.
इसका कन्वर्स, बट वी आर गोइंग टू डू दैट लेटर अलग से। ओके हाँ, लेकिन मैं एक मुझे एग्जाम्पल करनी थी जो मैंने लास्ट टाइम नहीं की। तो वी नो दैट जो हमने किया था सी ए बी का मतलब है means all continuous functions defined on this closed bounded interval to the field k जो भी हमारा field हो, in our case it would be set of real numbers or set of complex numbers such that f is continuous। अगर ये collection है हमारी functions की, CAB is a Banach space है। चलो नॉर्मल लीनियर स्पेस तो है ही, बानाक भी है एक्चुअली, जो हमने शायद पता नहीं कब किया था, कल किया था शायद। नॉर्मल लीनियर स्पेस, और जो नॉर्म है इसका कि नॉर्म ऑफ एफ इज द सुप्रीमम over t belongs to AB f of t, modulus of f of t. And the reason being that f is continuous on a closed boundary interval, therefore it must be bounded and hence it must have a supremum. This set, its range in modulus must have a supremum. Okay, but I can also think of it अगर मैं CAB लूं. Now this is of course a normal linear space. I have another norm. I can define another norm on it because every continuous function is Riemann integrable. So if I choose my norm of f to be on the same space, vector space wise same है, लेकिन अगर मैं norm ऐसे लिखूं a to b ft in modulus dt, so under this this defines a norm on CAB also, because पहली बात तो f integrable है और दूसरा f continuous है, वो important है, f का continuous होना इस norm के लिए बहुत जरूरी है। so उसके लिए इसको norm दिखाना बड़ा easy है। हमें पता है f of t जो है, चलो norm of f जो है पहले वो नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि of course f of t जो है its modulus तो नॉन नेगेटिव होगा, and if you take the integral of a non-negative function, so integral is also non-negative, which would imply that norm of f is non-negative. Furthermore, अगर f का norm 0 है या f 0 है, तो it would mean if and only if norm f is 0, मतलब you can check that। पहला वाला तो easy है कि अगर f 0 है तो 0 function का जब integral लेंगे तो वो 0 ही आएगा। Now suppose if norm f 0 है, इसका मतलब है कि इंटीग्रल माइनस ए टू बी, मैं माइनस वन प्लस वन लिख रहा हूँ, सो वैसे माइनस वन मतलब ए बी आर जस्ट एनी रियल नंबर्स, ए बी इंटू एफ टी डी टी इज 0। अब अगर ये कंटिन्यूअस ना हो तो इसका मतलब नहीं होता कि एफ कंटिन्यूअस होना और नॉन नेगेटिव होने की वजह से इट वुड इम्प्लाई दैट it has to be 0 for all this thing, which means that f is a zero function। so ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही इजी है, इफ यू टेक नॉर्म ऑफ अल्फा एफ, it would be simply minus a to b mod of alpha f evaluated at t in modulus dt। Now that would be a to b, it would be alpha into f of t as numbers। Then as you know, modulus, we can write it mod of alpha into f of t dt। अब t के साथ अल्फा का कोई कनेक्शन नहीं, so it would be alpha into a to b modulus of ft dt, which would be of course alpha into norm of f। And of course the triangle inequality भी इतनी ही easy है, norm of f1 plus f2 is equal to a to b f1 plus f2 evaluated at t dt, which is equal to a to b as numbers f1t plus f2t of course dt। Now we know that f1t plus f2t is less than equal to f1t, क्योंकि रियल नंबर्स है, मॉडुलस नहीं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं बट मॉडुलस रियल नंबर है। सो अगर दो फंक्शंस
में एक इनइक्वालिटी है, तो उनके इंटीग्रल्स में भी वो इनइक्वालिटी रहती है। यानी अगर मैं फिर इंटीग्रल लूँ इसका, provided they are integrable, which in this case they are, because they're continuous, so ऐसे होगा। So which is nothing but a to b, you just split the integral now, plus a to b f2t dt. Okay, so this is just norm of f1 plus norm of f2. So we have shown that this is a norm. But जैसे सी ए बी की हम बात कर रहे हैं ना, इसमें हमने देखा दो नॉर्म्स हैं। एक तो ये है सुप्रीमम नॉर्म टी बिलोंग्स टू ए बी मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टी। दूसरा नॉर्म, चूंकि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होती है, सो आई टुक दिस, लेट्स कॉल दिस नॉर्म स्टार। अब मैंने दूसरा नॉर्म भी इसी पे डिफाइन किया, दैट वाज, चलो मैं लिखता हूँ नॉर्म ऑफ एफ, यहाँ पे लिखते हैं नॉर्म ऑफ एफ। सो दिस इज माइनस, ए टू बी मैं माइनस क्यों लिखूँ, एक्चुअली मैं इसके लिए जो काउंटर एग्जांपल दूंगा वो -1 से ही आएगी। ओके, सो ये भी इस पे नॉर्म है, ये भी इस पे नॉर्म है। वी हैव शोन दैट सी ए बी, इफ अगर मैं ये नॉर्म लूं, इट्स अ Banach space, it is complete. But this is not a Banach space. Under this norm, the same linear space under this norm, let me call it double star, is not complete. यानी इससे ये पता चलता है एक ही वेक्टर स्पेस है, एक ही लीनियर स्पेस है, उस पे दो डिफरेंट नॉर्म्स हो सकते हैं। एक के अंदर वो एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस होती है या कंप्लीट नॉर्मल स्पेस होती है, मेट्रिक स्पेस इज नॉर्मल लीनियर स्पेस, और दूसरे के अंदर वही वेक्टर स्पेस कंप्लीट नहीं होती। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल, हाँ, so to show that, now मैं लिखता हूँ CAB is not complete under integral norm. By that I mean norm तो ये है, complete नहीं। Let me call it double star, नाम रखा है। ओके, तो अगर मुझे दिखाना ये कंप्लीट नहीं है, तो मुझे एक ऐसी कोशी सीक्वेंस दिखानी है इस स्पेस में जो इस स्पेस में कन्वर्ज ना करे। यानी आई हैव टू फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शंस which is Cauchy under norm second but does not converge inside CAB. So वही हम करेंगे। So let A को मैं लेता हूँ just B, क्योंकि एग्जाम्पल देनी है तो B को लेते हैं 1, and let Fn एक सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस में डिफाइन करता हूँ। It is 0 if -1, oh, I'm running out of time. If -1 is less than equal to x is less than equal to 0, it is equal to nx. If 0 is less than equal to x is less than, चलो 0 पे तो हमने डिफाइन कर दी, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। It is fx is 0 if less than equal to 1 by n, and of course it is 1 if 1 by n is less than x is less than equal to 1. So now these are all continuous functions. We just have to check at these सब इंटरवल्स, जो इंटरवल -1 to 1 है, वहां पे क्या होता है, वहां पे इनके वैल्यूज मैच होते कि नहीं, अदरवाइज तो ये कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे ये 0 पे 0 है, लेकिन अगर मैं यहाँ से लिमिट लूं as x approaches 0, this would also become 0, है ना। सो इसका मतलब यहाँ पर एक जहाँ पर गड़बड़ हो सकती थी, राइट। दूसरा 1 पे इसका वैल्यू अगर मैं x लूं 1 by n, so it would become 1, so यहाँ से जो लिमिट आएगा तो वो भी 1 के बराबर होगा। So indeed, these all fn's are continuous if we define them in this manner. And just to give you an example, अगर हम सोचे कि ये functions दिखती कैसी हैं, so f1x, f2x अगर मैं plot करूं, तो fnx का मतलब क्या होगा, f1x होगी, let me see, it would be 0 if -1 is जैसा कि है, it would be x if 0 is less than x is less than equal to 1, क्योंकि मैंने n को मान लिया। So it would be basically -1 से
मान लो ये -1 है तो ये 0 है, तो यहाँ +1 सकता है। तो -1 से 0 तक ये 0 ही है, और then it goes like this, it's x from 0 to 1. So it's a continuous function. f2x का कुछ different होगा, f2x कुछ ऐसे होगी, it would be 0 of course, फिर से and it would be nx means 2x. If 0 is less than x is less than equal to half, and it would be 1 if 1/2 is less than x is less than equal to 1. तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी f2, -1 से अभी ये 0 ही है यहाँ तक, then it is 2x up to half, so it would be like 2/2 है, उसके बाद 1 है, ये इस तरह से कुछ बनेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं मतलब इससे हमें आइडिया मिलेगा, तो तीसरी फंक्शन आई एक्सपेक्ट कि यहाँ से यहाँ तक फिर से 0 होगी, लेकिन अब इट शुड बिकम स्टीपर, ये 1/3 तक ऐसे 3x आ जाएगी और बाकी 1 रहेगी। सो दिस इज द मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन जो मैंने लिया एज सीक्वेंस, व्हिच आर ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस. I have to show that it's Cauchy under the norm second, but it does not converge, and it converges to a function which is not continuous. Okay. Now Fn, now we show Fn is a Cauchy sequence in CAP with integral norm. Let us do that. तो उसके लिए मुझे करना होगा, मुझे इवेलुएट करना होगा ये Fm, चलो Fm माइनस Fn लेता हूँ मैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, just for the sake of it, or let me choose m less than n. Just to be precise, अगर मैं m greater than 1 भी लूँ तब भी वही मिलेगा, लेकिन to evaluate I need to know whether m is less than 1, less than n, or n is less than m, just for evaluation's sake. So this would be -1 to 1, you would have modulus of fm minus fn evaluated at, let me call it x or t, जो भी तुम्हें पसंद हो, चलो x करता हूँ, x dx, which of course would be -1 to 1, of course, fmx minus fnx dx. अब इसमें ब्रेक करना चाहूंगा इसको, और लेट मी सी, ओके, इसका जो डोमेन है वहां चेंज हो रहा है ना, so let me go to 0, then I go to 1, ठीक है ना. Now m is less than n means 1 by m, 1 by n is less than 1 by m, which is less than 1, which is, ठीक है. So somewhere here there would be 1 by n, somewhere here आगे होगा, because 1 by m would be bigger, होगा 1 by m. Now I want to evaluate this function. देखो मुझे पता है -1 से 0 तक दोनों का वैल्यू सेम है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं fn लूं, यहाँ पर 0 है, 1 by n तक वो है nx, और फिर यहाँ से यहाँ तक उसका वैल्यू है 1. अगर मैं, ये तो fnx का हाल है, how that is defined, fmx का ऐसा होगा, राइट, यहाँ से यहाँ तक फिर से वो 0 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक वो mx है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, और फिर 1 by m से 1 तक वो 1 है. तो ये दिमाग में रखते हुए ये स्केच, so I must break it at 0 to 1, -1 to 0, fmx minus fnx dx, then I should break it at 1 by n, so it should be 0 to 1 by n, same thing, plus 1 by n to 1 by m, same thing, matlab same integrand, then of course 1 by m to 1, same thing. अब एक चीज क्लियर है, यहाँ पे जो सिचुएशन है, दोनों का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 1 ही है, और दोनों का वैल्यू यहाँ भी इस इंटरवल में भी 1 by m से 1 तक दोनों का वैल्यू 0 है, सो दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 0, मेरे पास सिर्फ दो इंटरवल बचते हैं, यानी 0 to 1 by n, let me write it again, fmx minus fnx dx plus 1 by n to 1 by m modulus of fmx minus fnx
dx। इतना कोई मुश्किल नहीं है वैसे। नाउ अब यहाँ देखते हैं, अब 0 to 1 by n इसका वैल्यू है mx, nx का है nx, और ऑफ कोर्स इसका भी है mx, इसका तो थोड़ा और बड़े इंटरवल पे है mx, तो इतने छोटे इंटरवल पे तो है ही। सो इट इज बेसिकली मॉड ऑफ mx माइनस nx प्लस 1 by n to 1 by m इंटेग्रल ऑफ, अब अब जो fm है वो तो mx ही है ना? नहीं, जरा मुझे देखने दो, इट इज 1 by n to 1 by m, यानी इस पोर्शन में जो है एफ एम एक्स तो एम एक्स ही है, लेकिन ये 1 है, बाकी पोर्शंस पे तो 0 है। सो इट शुड बी, यहाँ से यहाँ तक ये तो है, इट मींस इट शुड बी एम एक्स माइनस 1 डी एक्स। ओके, तो ये करने के बाद हमने ऑलमोस्ट इसको इवेलुएट कर लिया। सो इट मींस दैट नॉर्म ऑफ एफ एम माइनस एफ एन इज इक्वल टू, क्या था ये, m minus nx, let me write it here, m minus n x dx, of course you have 0 to 1 by m था शायद, क्या था, 1 by m था ना, right, नहीं 1 by m था, 1 by n, of course इसमें मॉड लगा हुआ है, प्लस 1 by n to 1 by m, I think you have 1 by m, so क्या था ये, mx minus 1, no issue। ठीक है, अब फर्दर मोर में कर सकता हूँ, I know that, मैं क्या ले चुका हूँ, m को बड़ा कि छोटा, ओके, m is less than n, easy, तो m is less than n, sorry, it means m minus n is negative, and since x lies between x is positive, so m minus n into x is negative, और अगर कोई नेगेटिव है तो उसका मॉड होता है नेगेटिव, यानी मैं मॉड को हटा सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 0 to 1 by n, n minus mx dx, और of course यहाँ पर भी चूंकि x lies between this range, so you have x is less than 1 by m, so mx minus 1 is negative, so using the definition of the mod, so यहाँ पे 1 by n है, यहाँ पे 1 by m है, so you should get 1 minus mx dx। अब तो इंटीग्रेट करना है, यहाँ x है, सॉरी, so this would be n minus m into x square by 2 evaluated from 0 to 1 by n plus, let me write it as, यहाँ क्या आएगा, x minus mx square by 2 evaluated from 1 by n to 1 by m। So short में मैं चाहूंगा ये तुम खुद थोड़ा evaluate करो, it would be simply 1 by 2 m minus 1 by 2 n, वो तुम खुद करोगे, इतना तो कर ही सकते हो। So which goes to 0 as m n approaches infinity।